Okay, students. Good evening, students. Am I audible to you, and is the screen visible to you? Am I audible? Yes, sir. Okay. So yesterday a student asked about where we use kebab case. So kebab case basically is not used in programming languages, but kebab case is used in HTML and CSS. Kebab case is used in HTML and CSS, but it is not used in programming languages. So before starting today's session, just do subscribe our channel so that you can get connected with SkyHacks for future boot camps. And now let's start today's lecture. Yesterday we have covered about variables. Yesterday we have covered about variables, data types, and now today let's move to the Java user input. So when the user input is used, suppose समटाइम्स क्या होता है आपको कि हमें यूजर से इनपुट लेने की जरूरत पड़ती है. जैसे यस्टरडे हम डिक्लेयर कर रहे थे ना, इंट ए इक्वल्स टू 7. सो समटाइम्स हम यूजर से पूछते हैं कि आप बताओ कि हम इंटीजर की क्या वैल्यू रखें. इस टाइम हमें जो है यूजर से इनपुट लेना पड़ता है. सो फॉर गेटिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर वी यूज स्कैनर क्लास. स्कैनर क्लास इज फाउंड इन द जावा डॉट यूटिल पैकेज. अभी हम इसे कोड से देखते हैं कि क्या है ये. So for using the scanner class, we should create an object of the class and use any of the available methods found in the scanner class documentation. तो ये methods क्या है, class क्या है, तो ये सब हम देखते हैं अपने कोड से. Just a minute. I'm setting the comments. So ये देखो, कल के प्रोग्राम में आपके पास ये लाइन नहीं थी, import java dot util dot scanner. सो बेसिकली क्या है, जावा में हमारे पास डिफरेंट पैकेजेस हैं. लाइक पैकेजेस को आप now maybe the screen is more visible to you. Let me check if there's any doubt to you. Okay, so I was explaining that in yesterday's code this line was not present, import java dot util dot scanner. So what is it? So हमारे पास जावा में क्या है, पैकेजेस हैं. पैकेजेस को आप एक तरह से फोल्डर समझ सकते हो. मतलब फोल्डर तो नहीं कह सकते, बट हाँ रफली आप फोल्डर समझ सकते हो कि फोल्डर्स जिसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स हैं. तो वैसे ही जावा के पैकेजेस के अंदर ऐसी बहुत सारी क्लासेस वगैरह हैं जिसे आप एज इट इज इंपोर्ट कर सकते हो. सो यूजर इनपुट लेने के लिए हम स्कैनर क्लास जो है वो वहां से इंपोर्ट करेंगे. यानी उस पैकेज से वो फाइल हमने वहां से इंपोर्ट कर ली है, जिससे कि उसकी फंक्शनैलिटी हमारे कोड के अंदर आ जाएगी. तो हमने यहाँ से इंपोर्ट किया. अब नेक्स्ट लाइन जो है वो एज इट इज है, हमने मेन क्लास बनाई है. हमारी जो फाइल का नेम भी मेन है और हमारी क्लास का नेम भी मेन है. क्लासेस आर स्टार्टेड विद द अपर केस
and methods are started with the lower case. सो अब यहाँ पे ये देखो, हमने स्कैनर क्लास बनाई, स्कैनर क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है? सपोज आप ऐसे मान सकते हो जैसे आपकी फुल क्लास है, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऐसे मान सकते हो। जैसे आपकी मान लो क्लास है, उसके अंदर 30 स्टूडेंट्स हैं, तो हर स्टूडेंट को आप एक ऑब्जेक्ट मान सकते हो, दैट दीज 30 स्टूडेंट कंसिस्ट टू मेक अ क्लास। तो क्लास इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो वहाँ ये ऑब्जेक्ट्स जो है ये आपको क्रिएट करने पड़ते हैं। क्रिएट आप कुछ भी नेम दे सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने माई ऑब्जेक्ट नेम दिया ना, आप इसे सपोज ओनली ओबीजे दे दो ऑब्जेक्ट। तो मैंने ओबीजे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब यहाँ पे क्या है? न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। व्हाट डज इट मीन? स्कैनर तो आपकी क्लास को डिफाइन कर रहा है, और न्यू कीवर्ड ये आपको लिखना ही पड़ेगा यहाँ पे। न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन का मतलब है कि आप कीबोर्ड से आप वैल्यू रीड करो। कि जो यूजर है वो हमारा क्या करेगा? कीबोर्ड से एंटर करेगा वैल्यू, तो वो यहाँ पे वो रीड करके यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। सिस्टम डॉट इन जो है वो कीबोर्ड से इनपुट रीड करेगा। नेक्स्ट हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ये जस्ट हम आउटपुट में हमें एंटर यूजर नेम प्रिंट करके देगा। ये देखो आउटपुट आपको विजिबल होगी, एंटर यूजर नेम जो है वो आपको जस्ट प्रिंट करके दे रहा है। नेक्स्ट स्ट्रिंग यूजर नेम इक्वल्स टू माई ऑब्जेक्ट मैंने चेंज कर दिया, ओबीजे कर दिया है, ओबीजे डॉट नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पे क्या किया मैंने? ये मैंने एक मेथड लगाया है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट नेक्स्ट। ये इस मेथड का क्या नेम है? ये मेथड क्या करेगा बेसिकली? जो आपने वैल्यू रीड की थी यहाँ पे कीबोर्ड्स के, उसे ये यूजर नेम में स्टोर करेगा। स्ट्रिंग आपका डेटा टाइप है, यूजर नेम आपका वेरिएबल है। वेरिएबल में ये वो वैल्यू स्टोर करेगा जो कि सिस्टम डॉट इन ने कीबोर्ड से रीड की थी, जो यूजर ने इनपुट दी थी, कीबोर्ड ने उसे रीड की विद द हेल्प ऑफ सिस्टम डॉट इन। एंड अब वो ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट से यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा यूजर नेम में। सो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन यूजर नेम इज, ये इन्वर्टेड कोमास में है तो ये तो एज इट इज प्रिंट होगा, प्लस यूजर नेम। प्लस यूजर नेम ये क्या है? जो वेरिएबल में आपने वैल्यू स्टोर की वो यहाँ पे आके आपको शो होगी। यूजर नेम इज, सपोज यूजर जो है वो आपका कुछ भी वैल्यू प्रिंट करेगा वो यहाँ यूजर नेम में शो होगी। और ये ओबीजे डॉट नेक्स्ट ये क्या है? आपका मेथड। दीज मेथड आर यूज टू insert values that are being read from the keyboard। अब ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, लाइक स्ट्रिंग के लिए जो है ये नेक्स्ट मेथड है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट नेक्स्ट मेथड है। स्ट्रिंग्स के लिए ही नेक्स्ट लाइन मेथड भी है। मैं अभी नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन के बीच में आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। सो पहले इसकी आउटपुट देख लेते हैं। सपोज एंटर यूजर नेम, यूजर जो है वो अपना नेम एंटर कर रहा है, एंटर करेगा तो उससे क्या आ जाएगा? आपने नेम जो टाइप किया उसके बाद आपने एंटर बटन प्रेस किया, देन यू हैव आउटपुट यूजर नेम इज शिवम। इज दैट क्लियर? इज दैट पॉइंट क्लियर? यस सर। ओके, सो अभी एक चीज मैंने बोली थी आपको। हाँ, आई वॉज टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द यूज नेक्स्ट एंड नेक्स्ट लाइन। सपोज ये जो यूजर का नेम है ये काफी बड़ा नेम है, let us also check YouTube comments for a while. Good evening, good evening.
Okay, till now I think there is no doubt. So those who are getting in errors in submitting their test, I will resolve your errors after the class. Now let's just focus on the class. So if the username is suppose more than consisting of more than one word, then your next method will not be appreciated. See, it is only fetching the first word, that's शिवम. So next method क्या करेगा, जहां पे भी आपकी स्पेस आ जाएगी ना, उसके बाद वो सारी चीजों को निग्लेक्ट कर देगा. शिवम के बाद आप हमने स्पेस एंटर की थी, वो स्पेस के बाद जो भी आप टाइप करोगे ना वो उसे निग्लेक्ट कर देगा. इसीलिए इसे इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास एक मेथड है नेक्स्ट लाइन. अब यहाँ पे कुछ भी आप एंटर करो, वो पूरी के पूरी लाइन ही फेच कर लेगा. ये तो सो नेक्स्ट लाइन इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड. अगर आपका सिंगल वर्ड का नेम भी हुआ, सिंगल वर्ड की स्ट्रिंग भी हुई, तो भी नेक्स्ट लाइन वर्क करेगा. इसी कोड में अगर मैं ओनली शिवम देता तो भी रन करता. वो सिंगल नेम अगर मैं यहाँ पे यूज एंटर करता तो भी ये वर्क करेगा. ओके, तो नेक्स्ट लाइन मेथड आपको क्लियर है. Yes, sir. Okay. So as far as the YouTube comments are concerned, I will reply them personally. This next and next line methods are for string, but we have some different data types also, like integers, floats. So for those data types we have different methods. First we should make comment out this code. सो अब हमारे पास यहाँ पे कोड है. मैंने माई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वहाँ से system डॉट इन से वो कमांड दे दी कि आप प्रोग्राम को कमांड दिए कि कीबोर्ड से डेटा रीड करो. देन एक सिंपली एक लाइन प्रिंट कराई है, एंटर नेम, एज एंड सैलरी. Notice one thing that here ln is present. It means when you enter your name, after that press enter. In next line you will enter your age, and in further next line you will enter the salary. String name, string is string data type, name is the variable name. Here I am declaring the method next line. This will read the whole line, whole three line, and name, age and salary, all these will be read. Int age, my object, no, this will not read the whole line, this will read only the name, because in name we will store string value, in age we will store integer, and in salary we will store the double value. Either we will store integer value, float value or double. But अभी हमने यहाँ पे डबल इसलिए मेंशन किया है, मैं आपको टाइपकास्टिंग के बारे में आगे मैं बताऊंगा कि क्यों हमने डबल मेंशन किया है. वो अभी इसकी आउटपुट देख लेते हैं. नेक्स्ट वी हैव लाइन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नेम, आपका नेम प्रिंट करेगा, एज प्रिंट करेगा, देन सैलरी. सो लेट अस फर्स्ट सी इट्स आउटपुट. Yeah, first I have entered Shivam, then 20, then entered. So it is fetching the name value as Shivam, age is 20 and salary is 0. So we have three method. Next line for fetching the string value, next int will fetch the integer value, and next double
will fetch the double value. What is double? Double is nothing but it is a decimal value. Float and double both are decimal value, but double can store more range of decimal numbers. Is it clear? Sir, can you explain the scanner again? Okay. स्कैनर बेसिकली आपकी क्लास है. स्कैनर क्लास यूज करके ही आप जो है यूजर से इनपुट गेट कर सकते हो. तो यहाँ पे क्या किया मैंने, जावा के डिफरेंट पैकेजेस से वहाँ उन पैकेजेस से मैंने स्कैनर वाली क्लास जो है वो इंपोर्ट कर ली है. इंपोर्ट इसलिए किया सो दैट कि उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो मेरे कोड में आ जाए. स्कैनर क्लास का मैंने पहले ऑब्जेक्ट बनाना है. उसके बाद ये सिंटैक्स है, ये आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा. स्कैनर कैपिटल लेटर में बिकॉज इट इज क्लास नेम. फिर ये आपका ऑब्जेक्ट है. माई मतलब ऑब्जेक्ट का नेम आप कुछ भी रख सकते हो. यहाँ पे माई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. न्यू आपको लिखना ही पड़ेगा क्लास नेम. देन सिस्टम डॉट इन विल रीड द इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड. और ये जो माई ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट लाइन है, माई ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट, माई ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट डबल, these are the methods. These are the methods for fetching the values that are being read by the keyboard. They will fetch the values read by the keyboard and put into the variable. Now clear? Recent code अभी आपको clear है? ओके. सो यहाँ पे मैंने मेथड के नेम लिखे हैं. नेक्स्ट बाइट जो है वो आपका बाइट एक्सेप्ट करेगा. नेक्स्ट शॉर्ट आपका शॉर्ट बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग. बेसिकली दीज ऑल आर द इंटीजर्स बट ऑफ डिफरेंट साइजेस. सो इनके साइज मैंने कल आपको स्पेसिफाई किए थे. दीज ऑल आर द इंटीजर्स बट ऑफ डिफरेंट साइजेस. Next line will accept a line of string. Next boolean will accept a boolean. Next float will accept a float, and next double will accept a double value. Next is typecasting. What does typecasting means? Typecasting means converting a particular data type into another data type. So as you can see on the screen, typecasting is when you assign a value of one primitive data type to another. So typecasting can be done in two ways: widening typecasting and narrowing typecasting. Widening typecasting is automatically done by the system, but narrowing typecasting is done by the programmer. So what does widening typecasting do? It converts a smaller data type to a larger type size. So इसमें आपको कुछ भी मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है. वो अपने आप ऑटोमेटिकली उसे कन्वर्ट कर देता है फ्रॉम स्मॉलर डेटा टाइप टू लार्जर डेटा टाइप. सपोज यहाँ पे आपको जो है सीक्वेंस दिया हुआ है बाइट, देन शॉर्ट इज ग्रेटर देन बाइट, कैर इज ग्रेटर देन शॉर्ट, इंटीजर इज ग्रेटर देन कैरेक्टर, लॉन्ग इज ग्रेटर देन इंटीजर, फ्लॉट इज ग्रेटर देन लॉन्ग, देन एट लास्ट वी हैव डबल. सो लेट्स चेक इट्स प्रोग्राम. First, let us manage comments. Yeah. Int, my int, suppose I here write a for the sake of simplicity. So I have declared an integer data type with variable a and assigned value 9 to it. Double, my double will store the value of a. So you can see that this is not a decimal number. It is simply an integer 9. So but what will be its output? Its output will be 9.0.
it automatically converts integer into a double. It is done by the system itself. So just a minute, comments are not set properly. Let me first set the comments. Yeah. First is system.out.println a. It will print the value of a, that is 9. After that, we are putting this a into the my double variable whose data type is double. So when we will print the value of my double, it will print 9.0. The system has automatically done the automatic typecasting. It has converted integer into double by on. So is it clear? Yes, sir. Okay. Next we have narrowing casting. Narrowing casting is done by the programmer. So converting a larger type into a smaller data type. So as you can see on the sequence, and this is possible for primitive data types. As I have mentioned earlier, typecasting is possible for primitive data type. So let me explain you the code so that things become more clear to you. First, let me set the comments. Yeah, I have mentioned narrowing casting must be done manually by placing the type in parenthesis in front. So आपको यहाँ पे type भी mention करनी पड़ेगी. Suppose I have created my double variable having data type double and it has stored 9.7D. You need to mention the D and F whether you are specifying double or float data type. So what is it doing? Int. Next I have declared a int data type with variable my int, and here I'm converting my double variable into the integer type data. So in the parenthesis you must mention the type of you must mention the data type in which you are going to convert it. So as you can see 9.78. So one most common mistake which is being done by the beginner is that they tend to do round off. So in programming there will be no round off. अगर आप इसे integer में convert करने का सोचेंगे तो मे बी आप सोचें कि ये 10 आएगा, but no, the result will be 9. It will only fetch the integer value before the decimal. So let us check the output. Yeah, we are first printing the double value which is 9.78. After that we are printing my int value which is nothing but 9. So I think narrowing casting is clear to you. Typecasting is clear to you? Okay. Yes, sir. Okay. After that, we have the topics of operator. Operators are used to perform operations on variables and values. Suppose we have a expression a plus b. So here plus is the operator which is used to perform a specific operation, and a and b are operands. The variables on which you are going to perform operations are called operands, एंड जो आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो क्या है आपके ऑपरेटर्स. सो जावा डिवाइड्स द ऑपरेटर्स इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स. जावा में कौन से ऑपरेटर्स हैं आपके? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स,
assignment operators, comparison operators, logical operators, and bitwise operator. So let us check all these one by one through the code. So we have arithmetic operators: addition, subtraction, multiplication, division, modulo, increment, and decrement. So let me explain all these. If I'm declaring the x variable with value y, after that I'm declaring y variable with value 3, and I'm printing x plus y. Simply addition operator will add the values, so output will be 8. So as you can see, your output is 8. So if we use instead of subtraction, instead of addition, we will get 2. Simply these are as simple as the mathematics of a first class student. After that we can perform multiplication also. Result as 15. Division 1. So in division you can notice one thing: 5 divided by 3 will return some value in the decimal number, but your output is 1 because converting that float value into the integer value. It is done by the system automatically. After that we have modulo. What is this modulo? Modulo basically denotes the remainder. If you divide x with y, if you divide 5 with 3, you will get 2 as the remainder. So this modulo symbol denotes the remainder. Yeah, you can see we are getting 2 as the output. After that we have plus and plus. After that we have plus and minus. Plus basically denotes increment, and minus denotes decrement. One thing which can be noticed, that all these operators contains two variables. They can not variables, they basically need two operands, x and y. But these increment and decrement operators are unary operators. It means that they need only a single operand. So let me first set the comments. Yeah, I have declared. इसलिए इसको भी कर देते हैं. I have declared integer I as 3. After that, I am performing I plus plus. What does it mean? Increment its value. So I am storing A into I plus plus. It means that you up बेसिकली प्लस प्लस इज पोस्ट इंक्रीमेंट. इट मीन्स कि अभी के लिए आपकी वैल्यू वही है आई की, बट फॉर द नेक्स्ट टाइम इट इज इंक्रीमेंटेड टू 4. सो व्हेन वी आर writing the print statement system.out.println a, it is printing 3 rather than 4. Why? Because post increment denotes that use the number as it is now, but for the next time just increment it. बट फॉर द नेक्स्ट टाइम योर आई विल बिकम 4. अगर आपने यहाँ पे कोई और ऑपरेशन करना है, सपोज इसके बाद आप डिनोट करना चाहते हो
system. Yeah, so it is denoting 6. आप कहोगे कि यहाँ पे आई 3 है, 3 + 2 आंसर 5 होना चाहिए, बट वाई इट इज डिनोटिंग 6? बिकॉज दिस पोस्ट इंक्रीमेंट विल इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ आई for the next operation which are being performed. But here, when the operation is being performed, the value is as it is. सो अभी के लिए तो ए की वैल्यू आपकी 3 है, बट फॉर द नेक्स्ट ऑपरेशन विच विल बी बीइंग परफॉर्म, द वैल्यू विल बी इंक्रीमेंटेड एज 4. आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर टू यू. लेट मी आस्क. So is the post increment clear to you? Okay. Similarly, we have post decrement. Suppose minus minus. So for the now, a value of I will be 3. For the next operation, for the now value of A will be 3, but for the next operations, your I will become 2. या A is 3, बट आपका जो I है वो वहां पे 2 बन जाएगा. This was the post increment and post decrement. After that, we have pre increment and pre decrement. Yeah, as you can see that we have declared I as 3. After that, we have post increment. The value of A has become 3, but I has become 4. After that, we are pre-incrementing I. It is now 4. 4 plus 1 is 5. So when I'm printing B, the value is 5. It means for it is incrementing first, but for the next operations, the value is as it is. So next, this was all about the arithmetic operators. Next, we have assignment operators. As the name suggests, assignment operators are used to assign values. So we have so many assignment operators, but we will be covering the first, we will be covering the most important ones. Let me set the comments first. Assignment operators are equal to, plus equal to, minus equal to, multiplication equal to, division equal to, and modulo equal to. I am declaring the x variable with value 5, and here I am. So in the first statement, we are using equal to assignment operator. Equal to assignment operator is simply assigning the value 5 in the variable x. Next, I have written x plus equal to 3. What does it mean? It means x is equal to x plus 3. Now I am assigning the
value to x which is equal to x plus 3. It is a shortcut method to write this equation. So now x will become 8. You can see the output. Now x has become 8. Similarly, we have subtraction equal to, if we use subtraction equal to basically subtract the value. So the x will become 2. Multiplication equal to will return value according to multiplication. Now your value will become 15. And similarly for the division equal to and modulo equal to. Yeah. After dividing 5 by 3, we are getting 1 because it is explicitly converting the float value into integer. इंक्रीमेंट वाला टॉपिक एक बार फिर से दस दो. ओके, मैं आपको बता देता हूँ. थोड़ा सा वेट करो, ये ऑपरेटर्स कर लेते हैं वरना ये टॉपिक रह जाएगा. थोड़ा सा वेट करो, अगर इंक्रीमेंट वाला रह जाता है तो हम एक्स्ट्रा टाइम भी ले लेंगे 8 o'clock के बाद. आफ्टर दैट असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बाद है हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स. Comparison operators will basically compare the compare the operands. So we have equal to, not equal to. This denotes exclamatory equal to will denote not equal to, double equal to will denote equal to. जो नॉर्मल लैंग्वेज में आपका इक्वल टू का मीनिंग होता है वो प्रोग्रामिंग में डबल इक्वल टू डिनोट करता है. नॉर्मल इक्वल टू जो है वो असाइनमेंट के लिए डिनोट होता है कि वो वैल्यू असाइन कर रहा है. बट डबल इक्वल टू विल चेक द इक्वालिटी. Less than, greater than, less than equal to, greater than equal to. So if I have 5 value in the x variable, 3 value in the y variable, and I'm checking is x equal to y, so it is clearly visible that x is not equal to y, so we will get false as output. Yeah, we are getting false. But what if they are equal? Then we are getting true. Not equal to, suppose here I use not equal to, so it will return true because x is not equal to y. So this comparison operator will return you value in the Boolean form. Similarly, these are greater than, smaller than, greater than equal to, less than equal to. These will work in the similar manner. If I check x is smaller than y, which is false, so we will get false value. X is greater than y, we will get true as output. X is less than equal to y, so it will return false. And x is greater than equal to y, it will return true. So I think comparison operators are clear to you. Sir, in Java is similar to C++ or different when it comes to array if else loop? It is similar to C++.
Yesterday I was discussing the same point. Java is so much similar to C++, so that's why sometimes switching becomes easy for programmers. Next we have logical operators. I think we have slides about logical operators. Let me check. Yeah. We have a truth table for logical operators. There are three logical operators in Java: and, or, and not. Basically, in this we will check two conditions. If one condition is false, another condition is also false. We will in suppose I'm first focusing the logical and. In logical and, it always returns true when both the conditions are true. Here you can see both the conditions are true, so we are returning true. If both conditions are false, we are getting false. If any of the conditions are false, we are getting false. But it is totally opposite for the or operator. If both are false, we are getting false. But if any of one is true, we are getting true. A condition is true but B is false, we are getting true as output. Here B is true but A is false, we are getting true. And if both are the true, then it will be true itself. And not logical not will do the reverse. Suppose both are true in you can also say that if both are true, then we will get in not operator as false. So अभी ये नॉट वाला आपको प्रॉपर मैं कोड के साथ बताता हूँ. सो पहले कमेंट सेट कर लेते हैं. Yeah. So I am declaring int x equal to 5 if x is greater than 3 and x is less than 10. X is greater than 3 and x is less than 10. So both conditions are true. So we will get the answer, we will get the boolean value and the output will be true. Yeah. As you can see on the output is true. But suppose if any of them is false. Now x is not less than 3. So one condition is false and one condition is true. But we are applying the AND operator. So the output will be false. And instead of AND, if we are using OR operator, so we will use the OR operator, then if any of the condition will become true, then we will get the true as output. So I'm not getting the OR operator. Let me explain you through through an online website. Sir, you can also shift click backslash to get the OR operator. Okay, but now I have opened the website, so मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ अभी.
So we are here getting we are printing or operator between these two conditions. If x is greater than 3 and x is less than 4, so this condition is true, x is greater than 3, so we are getting true. If any of them is true, we will get true as the output. But if both of them will be false, suppose yeah, if both of them is false, we are getting false as the output. Similarly, we have logical not operator. सो लॉजिकल नॉट, ये आपके एक्सप्रेशन से बाहर डिनोट होगा. ये क्या करेगा, पहले आपके एक्सप्रेशन के अंदर डिटरमाइन करेगा x इज ग्रेटर देन x. Here x is 5, x is greater than 3 and x is less than 10. Both the statements are true, but the not will convert the reverse of the result which is being declared in the bracket. So here we are getting true, but this not will convert this true into false. This is the functionality of logical not. After that, we have some Java maths function in Java. So Java maths class has many methods that allow you to perform some mathematical task on numbers. First is math.max. So what it will do, if you pass two numbers as parameter, it will find the maximum of these two numbers. Suppose comments. So this max function will return the maximum of these two numbers. In 5 and 10, 10 is maximum, so we are getting 10. Similarly, we have min method. Min method will return the minimum of these two numbers. We will get 5. Max and min method, as you have seen, what is the functionality of max and min method? After that, we have math.sqrt method. This will return the square root of the number passed in as the parameter. Suppose math.sqrt 64. So it will return 8 as the output. After that, we have math.absolute. This method will return the positive value of the parameter passed. Suppose I am passing write ABS as a short form of absolute.
So it is returning the positive value of the number which is passed as the parameter. And last we have random method. Random method will return a random number between 0 and 1. So random method is sometimes applicably useful in creating games. So it is being generated by the system itself 0.4172. If I'm again running it, so every time you can see that the output is changing. So it generates a random number by its own. So do have to add any library for math? No. आपको मैथ्स लाइब्रेरी बाद में ऐड करनी पड़ेगी, बट यहाँ पे जो अभी मैंने आपको सिंपल मेथड्स बताए हैं, लैंग्वेज प्रोवाइड्स यू. ओके, तो जो यहाँ पे आपको सिंपल मैंने अभी मेथड्स बताए हैं, इसके लिए तो अभी आपको लाइब्रेरी ऐड नहीं करनी पड़ेगी, बट फर्दर वो आपको आगे बता दूंगा. अभी तो मैंने सिंपल मैथमेटिकल फंक्शंस बताए, तो इसके लिए आपको नहीं ऐड करना पड़ेगा. ये लाइक स्क्वायर रूट, ये सब आप बिना फॉर्मूलाज के इन मेथड को यूज करके कर सकते हो. So let me clear the doubt of increment operator to the student who was asking it. Yeah, so as I have declared here I and put the 3 value in the I variable. So if I am post incrementing the value I, so in the variable a it is storing 3 as it is. अभी के लिए तो ये 3 स्टोर कर रहा है, बट फॉर द फ्यूचर ऑपरेशंस आई में ये 4 स्टोर हो जा रहा है. ये आई को बेसिकली इंक्रीमेंट कर दे रहा है. पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट मतलब बाद में, अभी एज इट इज स्टोर कर रहा है बट बाद में इंक्रीमेंट कर दे रहा है. बट प्री के केस में क्या होगा, ये अभी इंक्रीमेंट करके स्टोर कर दे रहा है. सो ये किसका डाउट था? हरमनजोत. सो अभी आपको थोड़ा क्लियर हुआ पोस्ट इंक्रीमेंट क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट. पोस्ट इंक्रीमेंट बेसिकली क्या करेगा, अभी के लिए फॉर द इंस्टेंस, अभी के लिए उसे एज इट इज स्टोर करेगा बट फॉर द फ्यूचर स्टेप्स उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा. बट जो प्री इंक्रीमेंट है वो क्या करेगा, वो पहले ही उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा.
This post increment and pre increment operator is very confusing for the beginning programmers. So what you need to do is आप इन operators की एक बार practice करना, so that कि आपको चीज़ें more clear हो जाएंगी. So I think the lecture is sufficient for today. Okay, thank you guys. We will meet tomorrow at the same time, and don't forget to like, share, and subscribe the channel. So if there's no doubt, you can leave. Bye bye. Bye students. Take care.